हे एवरीवन, वेलकम टू द आईआईटी पॉडकास्ट। इस वीडियो में अपने दो दोस्तों के साथ बात करता हूँ जो दो अलग अलग जनरेशन के आईआईटी से हैं, और हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, आईआईटी में ज़्यादा टाइम क्या एक्सपीरियंस किया और क्या ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को अपने आईआईटी चूज़ करे टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा था इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। About Uh, my face. Go on, Mithil. We'll start from you. yeah, I mean, fests are awesome. Like, मैं ऐसे एक सिनेरियो से स्टार्ट करता हूँ. आई थिंक इट वाज सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आई एम नॉट श्योर. बैरिकेडिंग होती है. लोगों ने वो बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, अंदर घुस गए थे एंड वी हैड टू कॉल दिल्ली पुलिस. ठीक है. सो और उस टाइम शंकर महादेवन था और लाइक दो और आर्टिस्ट थे. सो मतलब उससे बहुत ही ज्यादा क्रेज है फेस्ट का. लाइक एक तो अगेन यार लोकेशन का बहुत बेनिफिट होता है बिकॉज वी हैव एंडलेस ड्यू कॉलेजेस देयर और उनमें हमसे भी ज्यादा क्रेज होता है हमारे फेस्ट का. सो बहुत लाइक वी हैव ऑसम क्राउड. इफ वी टॉक अबाउट द प्लानिंग तो मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग होती है. और like that process is also awesome. मतलब like we have one main fest, cultural fest, rendezvous. Other than that we have one main technical fest, Trist. ये फेब में होता है एंड कल्चरल फेस्ट इज इन अक्टूबर. सो इसमें मतलब इनफ गैप होता है, यू कैन पार्टिसिपेट इन बोथ. अदर देन दिस हमारे पास लाइक ये बहुत ही ऐसे वेल नोन फैक्ट नहीं है बट हमारे कॉलेज में ही पास में एक मैनेजमेंट की एक अलग बिल्डिंग है, उनका भी एक अलग फेस्ट होता है. अदर देन दिस अब तो लाइक इन लाइक वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने हमने एक पोएट्री फेस्ट भी स्टार्ट किया था. आई डोंट नो वो अगर अभी भी वहाँ पे होगा या नहीं, बट दिस वाज लाइक ऑल इंडिया पोएट्री फेस्ट, वो हमने अपने कॉलेज में पहली बार कराया था. सो मतलब अगेन दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स आई वाज टॉकिंग अबाउट. लाइक मतलब इफ यू टेक इनिशिएटिव इन समथिंग, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. और लाइक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी थोड़ा काउंट इन कर सकती है बिकॉज कोई फेस्ट तुम तभी करा सकते हो व्हेन यू हैव इनफ स्पेस टू अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल, है ना. और again, because the location was nice, we can gather crowd from not just the college crowd, we can gather crowd from outside the city. Like I won't compare our fest to Modindigo. I yeah, this is one of the things I might envy from IIT Bombay. Like they have a very nice fest. There is like I'll start with what all fests we have primarily. So Kashi Yatra is our annual cultural fest. Technex annual techno management fest, and then we have Sparda. Sparda is our games and sports festival. So that is something that we claim to be the biggest games and sports festival in India. So I'm actually proud to be have been associated with that throughout my college, and then when I graduated, I was a senior advisor to the management committee there. So that is something I have seen a fest budding very closely. Uh, as far of experiencing what happens in a fest, like there is utter craziness. Like as Mithil said, uh, the way IIT Delhi has BU colleges, we have BHU colleges. So BHU as an university has a lot of different wings, commerce. There's a dedicated Mahila Mahavidyalaya. So where the IIT boys are interested at. So they take a lot of time and effort, to inquire about when is the fest is happening, who all would be invited, and over the course of time, I think the best I've seen was a stand-up comedy was Zakir Khan. Zakir Khan was there, and maybe the next would be Saurabh Pant. So these two were the most entertaining for me. Other than that, obviously there are like music night, gala nights. We've had ample number of celebrities performing. That is something like you go there and you enjoy. You are in a very jolly mood, so you just go there to enjoy. You just go there to cause ruckus, right? Something that I enjoyed a lot about Fest is people coordinating, people putting their heart out. So since I have seen it from the behind the scenes, right? So I've seen people putting their heart out, like तीन घंटे से okay, and then they are putting it just because to show that yes, we can do something. We as a team can do something. That is where a lot of my learnings come from. That is a lot of my Jugaad learnings come from. So Fest, like it has given me a lot of personality. It has given me a lot of good experiences.
it was always fun. Like there was no fest that I said कि यार मजा नहीं आ रहा. Every fest was like it is fun. So for us, we were the ones who started the fest. So we हमारे यहाँ दो बार फेस्ट हुआ है, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के टाइम पे. एंड सो स्टार्टिंग द फेस्ट वी थॉट कि भाई बहुत टेंशन है, ये बहुत कुछ, बट दे वेंट वेरी वेल. सो जब हमारा फर्स्ट फेस्ट हुआ तो इट वाज नॉट दैट बिग, बट स्मॉल स्केल. हमारे स्टूडेंट्स ने कि पूरे केरला में के हर सिटी में कॉलेज में के वो लगे भाई हमारा फेस्ट है ऐसे. Then the second year fest came, and we had a technical. So the name of both cultural and technical fest is Petrichor. So एक कुछ technical workshop थी, and we expected कि कुछ 100-150 students आएंगे, 700 came, and we were like ये क्या हो रहा है, 700 कहाँ से आ गए? हम 150 expect कर रहे थे, 700 कहाँ से? And that's when we realized कि अच्छा people are getting to know about IIT Palakkad and the fest, and it was surreal. Like we had Thaikudam Bridge as our pro performance. And it's the same as Pratik said. It is something that kind of gives you a moment of pride कि हमने fest किया है. You are a part of something bigger, and that kind of like, and of course in the end you are all enjoying. I have not attended any other IIT's fest जो मेरे को करना था, but नहीं कर पाया unfortunately. And other than this, you can write this on your CV. So Yeah. So possession of responsibility is something that Yeah, हर कोई POR. बंदा लिखता है अपनी CV में. Dude, like वो मतलब वो रहना चाहिए, वो रहना चाहिए. POR sometimes feels like it is less for responsibility or more for position of responsibility. क्या CV पे लिखना है तो चलो कर लेते हैं. हाँ मतलब Sometimes it's half the motive yeah. Half the of a motive. lot of people. Yeah. Of a lot of हाँ people. हाँ, a lot of people. I mean, even if someone is doing like a position of responsibility without any, with एकदम selflessly, तो भी you can say 10% तो motive होगा कहीं ना कहीं ये CV में लिखेगा. Yeah. मतलब he is gonna write it. Actually उसको पता नहीं कि हाँ अच्छा ये लिख भी सकते हैं, अच्छा लिख भी सकते हैं ये, Actually होगा, लिख देंगे. लिख देंगे. Yeah. That But question like can circle back to the placements question कि like हाँ जब placements आते हैं तब we think कि हाँ ये लिख सकते हैं, हाँ लिख देंगे. हाँ लिख सकते हैं. शीट But क्रिएट होती है, अच्छा ये लिख सकते हैं. और मतलब ऐसे देखा जाए तो लाइक यार जो भी कॉलेज में करते हैं, मतलब इफ इट्स अ क्लब या फिर कोई भी सोसाइटी है या फिर कोई स्पोर्ट्स में तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, या तो मतलब लाइक इंस्टीट्यूट लेवल पे या फिर हॉस्टल लेवल पे या फिर इवन बेटर अगर तुम इंटर चले जाते हो, मतलब तुम कहीं भी एक्सेल कर रहे हो तो मतलब एवरीथिंग यू कैन राइट इट ऑन सीवी. मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा एफर्ट कहीं रिकॉग्नाइज नहीं होगा, मतलब इट पेज ऑफ. एंड लाइक हमको लगा भी कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि हम वी आर बेसिकली बिल्डिंग इट. कुछ नहीं था, फ्रॉम नथिंग वी आर गोइंग टू समथिंग. वो एक मोमेंट भी होता है कि अच्छा हमने किया है, वी कैन राइट इट प्राउडली कि हाँ आई वाज पार्ट ऑफ दिस थिंग ड्यूरिंग आवर फर्स्ट फेस्ट. अच्छा, सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज समथिंग कि मैंने बहुत देखा है अभी जेई काउंसलिंग फोरम्स पे देखता हूँ मैं कि कुछ ऐसे ब्रांचेस जो नॉन कन्वेंशनल है. You don't hear about them a lot. आप सुनते हो CS इलेक्ट्रिकल सिविल मेटलर्जी इनके बारे में सुनते हो. यू डोंट. अब कुछ एक बंदे को देखा मैंने फोरम पे ये बोलते हुए कि भाई IIT दिल्ली टेक्सटाइल ले लो. दिस इज व्हाट आई हर्ड. और अभी जो चल रहा है IIT रुड़की अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो. आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस थिंग्स बिफोर. नॉन कन्वेंशनल branches, and they don't even exist in my college. They might exist in your colleges. So what is the scope of these branches according to you? So if अगर कोई like if someone approaches me right now with a rank of 4000 और वो बोलता है कि मुझे IIT टेक्सटाइल मिल रही है, so I'll take it. इसके pros and cons है. pros ये है, मतलब you are getting a much better college than you should be getting because that's the only branch which is allowing you to get it. ठीक है, अगर if IIT टेक्सटाइल Delhi textile was not there, there was no chance you could get that college, right? So again वही ट्रेड ऑफ आ जाता है यहाँ पे. लाइक जितना ट्रेड ऑफ मैंने किया है उससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड ऑफ है वहाँ पे ब्रांच का. लाइक जितनी कंपनीज प्रॉब्ली सिविल इंजीनियरिंग के लिए आती है उतनी भी टेक्सटाइल के लिए नहीं आती है. बट लेट्स अज्यूम अ सिनेरियो वेयर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ब्रांच एट ऑल. ठीक है, मतलब यू हैव प्री मेड योर माइंड कि मुझे वहाँ ब्रांच के लिए जाना ही नहीं है. सो अगेन नाउ दैट यू आर इन टेक्सटाइल, लाइक मैं थोड़ा सा आई नो कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, बट समवेयर इसमें थोड़ा फैक्ट है कि टेक्सटाइल में उतना कंपटीशन नहीं होगा तुम्हारे. ठीक है,
it will give you several advantages. तुम किसी और मेजर में माइनर कर सकते हो, लाइक किसी और ब्रांच में तो माइनर कर सकते हो, बिकॉज यू विल हैव इनफ टाइम ऑन योर प्लेट, ठीक है। इसके अलावा यू कैन, मैं मतलब बहुत सारे लोगों को जानता हूँ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से हु एक्सेल्ड इन एक्स्ट्रा करिक्स अगेन टाइम, सो ये थोड़ा एडवांटेज मिलता है। सो मतलब डिसएडवांटेज तभी मिलता है लाइक इफ इंटरव्यूअर इज नोटिसिंग कि हाँ स्लाइटली लोअर ब्रांच है, but other than that you'll enjoy all the perks that your college enjoys. So I think that is a very big bonus. So I mean, if branch is not your goal, it has every corner, it has every pro attached to it. So I'll again pick that up. So one thing that I particularly do not like about the forum in general, the JE counseling forum in general, is that people do come up, have done their research. They do come up with valid arguments. Should I take X in this college, or should I take, let's say, X or Y in some other college? But the problem I have is people do not reach out to the alumni of that college or people who are currently studying. And I'm not talking about people who are currently in their freshman year or sophomore year. I'm talking about people who are in their undergraduate year, junior undergraduate, senior undergraduate, third year, fourth year, fifth year even. Those people have experienced life in college. Those people have experienced the struggles in college, which you do not, probably would not experience to the real phase of college that we call it. You would not experience it for the first 2 years in college. If you are talking to someone who's in his fourth year, he'll be able to tell you better as to why or why not should you pick my branch, right? And versus, let's say you talk to the other Y person as to why or why not you should pick your branch. That is one thing I believe that the candidate should do when it comes to making a choice. And then when it goes about should I pick a branch or should I pick a college? So that is a trade-off, and it cannot be generalized for thing. Like Mithul had a bias towards the college. I had a bias towards that. I want best of both worlds. Anish had a bias towards the branch. So like three people sitting right in front of you are giving you three different examples. So a countless number of people, like the number of people who appear for J, there will be endless number of possibilities, right? So it cannot be generalized. What you can do is make what there's something called a semi-permeable membrane, right? So you can keep your ears as a semi-permeable membrane. You can keep the things that you want with you, and you can pass all the information out. Rest of it. And that is going to help you, choose better. This is what I believe my approach is. The next part is like दो चीजें हैं which is related, internship and placements. Right. How were your experiences with that? क्या था आपको? My IT is not only very old, it's also like located very strategically. मतलब there are a lot of offices in Delhi and Gurgaon, so we enjoy this advantage over other ITs कि वहाँ पर हमारे पास कंपनीज बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। ऑल्दो एट द सेम टाइम मेरी ब्रांच की नहीं आती हैं, ठीक है। एंड इट्स नॉट लाइक कि मुझे और कोर ब्रांचेस का नहीं पता, लाइक आई वाज इन द टीम जो अपने कोर ब्रांचेस की लाइक we have to pitch some companies, like there is one team for pitching our college to लाइक एवरग्रीन कंपनीज जो आती हैं, ठीक है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, लाइक योर प्लेसमेंट सेल जो होता है, ठीक है। एक होता है लाइक इट्स देयर इन माय कॉलेज व्हिच इज ब्रांच ओरिएंटेड, ठीक है। सो अगर मेरे ब्रांच की जैसे लेट्स से 3-4 कंपनीज ही आती हैं, सो इट्स ऑन मी टू get new companies to come to my college. So we didn't have much luck there. I don't know why. एक तो ये भी टू फेस्ड होता है, लाइक कंपनीज कुछ है आना चाहती थी, बट इफ आई टॉक अबाउट माई पर्टिकुलर ब्रांच, हमारी ब्रांच में ऐसा होता है कि वी वैल्यू एक्सपीरियंस टू मच. सो इफ यू स्टार्ट जॉब इन सिविल इंजीनियरिंग, योर स्टार्टिंग पैकेज इज नॉट मच, सो इट डजंट लुक अट्रैक्टिव टू स्टूडेंट्स. तो वो क्योंकि हमें चाहिए होता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, हमें चाहिए होता है कि हाँ मेरे को 15-20 लाख की जॉब चाहिए, या फिर ठीक है विच लुक्स कूल. हम ऐसे लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते हैं, कोई भी नहीं सोचता, ठीक है, हमें ज्वाइनिंग पैकेज अच्छा चाहिए होता है. सिविल में क्या होता है कि योर पैकेज ग्रोज ओवर टाइम, तो इसमें स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता ज्वाइन करना. सो इस वजह से क्या होता है, कंपनीज भी जैसे पास्ट रिकॉर्ड चेक करें तो कुछ आई थी बट स्टूडेंट्स गए ही नहीं, दे डिडंट चूज देम. सो इस वजह से थोड़े
रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं है, सो इट वाज नॉट इजी टू गेट न्यू कंपनीज। बट कुछ बहुत अच्छी कंपनीज आई, लाइक आई वाज सरप्राइज्ड, मतलब मेरे से भी ज्यादा पैकेज की कुछ कोर कंपनीज हैं जो लाइक सेकंड सेमेस्टर में लेके गई हैं बहुत लेट। सो बट इफ ऐसे होलिस्टिकली बात करूँ तो वी एंजॉय दिस एडवांटेज कि वहाँ पर ड्यू टू कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड है और एक बहुत अच्छा लोकेशन है, तो अ लॉट ऑफ कंपनीज कम। You might face slight difficulty कि they are not allowing you to like compete for that interview due to your branch। लाइक कुछ कंपनीज होंगी जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के लिए ओपन होती है, मतलब इफ यू आर इन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बिकॉज एवरी कंपनी वुड वांट टू टेक यू, वुड वांट टू टेक यू एज एन दे विल ऑफर यू अ चांस। ठीक है, कुछ ब्रांचेस को ये लग्जरी नहीं होती है, बट अदर देन दैट आई गेस आई मीन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कंपनीज नहीं आएंगी इंटर्नशिप्स पे। मतलब नाउ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन द व्यू फ्रॉम इनसाइड, लाइक टीम की तरफ से। सो जब हम कंपनीज ढूंढ रहे होते हैं, सो अवर मेन फोकस इज कि वो कंपनी प्लेसमेंट के लिए हमारे कॉलेज आए। सो इंटर्नशिप्स का उतना अच्छा नहीं होता है सीन, मतलब आई डोंट नो व्हाई, मतलब कॉलेज की जो प्लेसमेंट टीम है उसका इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है इंटर्नशिप्स पे। बट इंटर्नशिप्स में यूजुअली वी हैव टू आउटसोर्स, मतलब हमें ऑफ कैंपस ही ढूंढनी पड़ती है कई बार। मतलब आई थिंक वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और इफ आई एम सेइंग कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि इंटर्नशिप्स का बहुत अच्छा कहीं भी सेटअप होगा। मतलब आई यूजुअली फाइंड कि इंटर्नशिप सीजन में लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लाइक ऑफ कैंपस मतलब फुल एफर्ट डाल रहे होते हैं, और जिसको अगर फॉरेन इंटर्न चाहिए होती है वो तो मतलब लाइक दे आर राइटिंग सो मेनी मेल्स। आई थिंक ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बहुत ही फॉर्मलाइज कर सकते हैं। आई डोंट नो हम इसमें इतना ज़्यादा इंडिविजुअल एफर्ट क्यों लगवा रहे हैं लोगों का। So I'll pick where Mithul left. So a few things I'll generalize across the board. जैसा मितुल ने कहा कि civil is a core company. So there's a term called core. Core is mechanical, chemical, civil, mining, metallurgy. So these all companies we term them as core. You learn the lingo as you come to the campus. So in companies, they do not enjoy the privilege of being allowed to sit in almost every interview that would be possible. वो usually reserved होता है for circuitous branches. Secondly, इनके जो core companies आती हैं, the companies that usually offer for these branches, they start out with very less packages, and दिस काइंड ऑफ बिल्ड्स अप अ पीयर प्रेशर कि लाइक मेरे बाजू वाला बंदा या मेरा रूममेट अगर 12-15 लाख की जॉब लेके जा रहा है तो मैं 6 या 8 लाख की जॉब क्यों लूं? I'll look for something else. I'll change my track completely. I have seen this happening. I have seen people switch from being interested in mining to being not interested in mining at all. I've seen that happen. So yeah, that is a generic thing. And when companies come and let's say the person gets selected, the candidate gets selected, but उसके मन में वो peer pressure रह गया कि यार 8 लाख की जॉब है, क्या करूंगा, छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, and maybe he exits within a year or two. So that puts a lot of pressure because, as Mithul said, these companies they value experience. उनका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपके ऊपर वेस्ट हुआ तो दैट बिल्ड्स अ नेगेटिव रेपुटेशन विद योर कॉलेज इन जनरल कि इस ब्रांच के बच्चे तो यार नहीं आते, व्हाई शुड बी अप्रोच देम फॉर प्लेसमेंट. So that is one thing. I think we can generalize this across the board for every IITs if I'm not being very lenient. So this is there. Internships in our college. So our college is a bit different that placement cell handles both internship and placement, and it is completely comprised of student body and is presided over dean. So that way ऐसा रहता है कि students themselves start pressurizing Placecom कि भाई internship के लिए companies लाओ, because obviously this is an easy route. You don't have to write hundreds of mail as Mithul mentioned कि people who are trying outside they're writing hundreds of mail. So an easy route is you get a chance from your campus placements only, right? There you can get your CV shortlisted. You have to fight with a smaller pool of people. Whereas अगर आप outside apply करते हैं तो there are thousands of applications. कुछ applications ऐसे भी होंगे जिनके पास experience होगा, आप तो अभी college में हैं. So that creates a lot of difference. इसलिए internship again that difference pressurizes our Placecom, and Placecom then tries harder to get more companies both for internship and placements. That is one key difference that I would like to point out between that there exists. Other than that, I think placement scenario is the same everywhere. Like if you have to get a placement, you're only limited by how much you think you can do. I have seen people hold 3 or 4 offers, like एक offer campus में, 2 offer बाहर, and then choose at the end कि मेरे को क्या लेना है. Or maybe
GRE deke ya CAT deke they go for higher studies. So this is like something that only you can limit yourself. If you think कि हाँ ठीक है हो गया, like I have an offer, I don't want to study or put in more efforts, so you'll be good with that also. Or if you think कि मेरे को और करना है, like मेरी 8 लाख की पैकेज लगी है, मेरे को 12 का खोलना है, मेरी 12 की लगी, मेरे को 18 का खोलना है, तो there's nobody stopping. You just have to work hard for it and you can achieve. That is one thing. So we have a similar structure. We have a CDC portal, completely decided by students, and we have a placement officer. And the internships and the placements are all seen by the CDC committee. And luckily for us, the CDC contacts companies and brings them to the IIT for placements and internship, which has surprisingly been good actually. Like I was thinking कि IIT companies इतने नहीं आएंगे, फिर कोई इतना internship नहीं, but surprisingly it has been good. We have some good number of offers, and so we have some professors from foreign universities as well. So they left the foreign universities to join the IIT. So that is why a lot of students from our IIT actually get offers, like get a chance to go to foreign institutes for internships as well. Like for example, one of my professors was a lecturer at NTU Singapore. So every year, 7 or 8 students go to NTU Singapore for internships every year. So that kind of, I was surprised by the kind of offers that we get and the kind of opportunities that are there in a new IIT as compared to a new IIT. I'm not saying that it is better than an old IIT or a second gen IIT. As compared to like what my expectations were, they exceeded them. I'd like to pitch in to one thing. Like Pratik was mentioning, when we compete on campus for a job, the pool is smaller. But I'd like to circle back again. Like I faced very tough competition in my college, so this is one thing we should always keep in mind. Agar hum like I think it varies with college. If I chose a college with better branch, maybe newer IIT, so I feel कि मेरा competition वहाँ कम होता. Like in everything, it could be academics, it could be while I'm sitting for placements या internships, और even वो जो skill है वो somehow trickles into your extracurriculars as well. मतलब ऐसा होता है थोड़ा सा. So if I had to compete in everything, I faced very tough competition. So this is something which you should be prepared for. I was not. Another point about like our CDC, like तो ऐसा होता है कि आपकी जॉब लगी 8 लाख की जॉब लगी है, and there is some new company जो आपकी कोर के है या कुछ आपके इंटरेस्ट है, but they have a higher package, but you can't apply because आपकी पहली जॉब लग चुकी है. So our CDC actually has a policy कि if their package is 1.5 times what your current package is, you can sit for them and you can switch the company. So you can go for the higher package. If it is Mitul, I 1.5 think times, this is available across IITs. Like this is the No, same no, rule no, in no, our no, IIT. no, 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 no. no. We have It's very not. strict rules. We have very strict Ah. rules. Do you We want to had speak to. about it? So I know about IIT Roorkee, ki like if you get a PPO, let's say you sit for campus internships, I'm talking about internships, and then you get a PPO from there, you're bound to accept it. So that is one rule that IIT Roorkee has. Ours is like they give you an offer. Would you like to accept it or would you like to sit for placement? So that is lenient there. But we do have this offer. Like if you sit for your placement, you get 8 lakhs, let's say, and then you can sit for a company that is offering 1.5 times or higher. So 12 lakhs or higher. So you can sit for a company there. So even We in don't our have this district, flexibility. Yeah. even in our Okay. IIT, if you have a PPO, you're automatically excluded from the placement criterion. You have a job. That's it. But if it is No, So 1.5 times, our then you can kind of. no. So we avail flexibility in one of the senses कि हमें PPO मिलता है. So we are given a certain time period. Within those weeks, if you accept the PPO, you are excluded from rest of the proceedings of the placement, everything. But if you do not choose, you are just a ठीक है मतलब you don't get any special advantage or anything. But on the day of the interview, if you can choose to tell the interviewer that I will be sitting for other interviews, but this is on your discretion because this can go against you. Because if you are telling them that I will be sitting for other interviews, they are slightly less inclined to uh, hire you because you are not their top priority, is what you are saying to them, right? So
we have to at the end of the day on our portal we are given an option like if you want to select that offer, but once we have selected that job, we cannot compete for another jobs is what we have. But this is not like hard coded in our like rules or anything. um, so this is decided by the person heading the placement committee at that particular time. Maybe that particular person has changed right now and the policy will change. It's not dependent on IIT, I would say. It's dependent on the person on the heading the person. committee. Yeah. Like this rule was not there before, like during our seniors time we were the ones who insisted that okay, we want this rule to be imposed, so then they started using that rule of 1.5 times. Right. In fact, I have a terrible experience in this. So I got an internship from our college, and I didn't like it at all. And like this was the time when I was still deciding what I want to do, like in future. Uh, so this internship was related to my branch, and I got an internship off campus. It was in Gurgaon, so like it was location wise also it was nice, and it was in consulting, that particular internship. And I approached like my placement cell, the head of the placement cell, a lot of times that I do not want to get that intern, which I've gotten from college, or they didn't allow me to forfeit that intern. Like they threatened me that they won't allow me to sit in like placement. So that's how strict they were at the time.